Good morning, students. My name is Avantika Pandey, and today I am here to teach you the topic of biotechnology from the class of 11th standard. And the topic is biotechnology principles and processes. Let us first know what is biotechnology. The definition of biotechnology is biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लाइव ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं ह्यूमंस के लिए. So, for example, in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine, or correcting a defective gene are all parts of biotechnology. So, like test tube baby, as we know, that test tube baby is also produced by the help of a particular DNA. तो इस केस में भी ऐसा ही होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर जीन को हम सिंथेसाइज करते हैं और उससे एक कंप्लीट न्यू बेबी डेवलप होता है. Then another example is developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all parts of biotechnology. हम कोई भी DNA से हम कोई भी वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं और डिफेक्टिव जीन को भी सही कर सकते हैं. These are all parts of biotechnology. Now let us go to the principles of biotechnology. The two core techniques that enabled the birth of modern biotechnology are genetic engineering. In genetic engineering is the techniques to alter the chemistry of genetic material DNA and RNA. जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली हम डीएनए एंड आरएनए का जो केमिकल केमिस्ट्री होती है उसको ऑल्टर करते हैं. Okay, now the second point is maintenance of sterile to introduce these host organisms and thus change the phenotype of the host organism. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बेसिकली डीएनए और आरएनए के केमिस्ट्री को चेंज करके और फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप होता है बाहरी कैरेक्टरिस्टिक उसको चेंज कर सकते हैं. सेकेंड इज़ द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस to enable growth of only the desired microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. The second point is we have to maintain a sterile condition in these chemical engineering processes. We have to maintain the sterilization process. We have to carry out the sterilization process before doing any kind of experiment ताकि वो किसी और चीज़ से कंटामिनेट ना हो और हमें पर्टिकुलरली डिज़ायर्ड माइक्रोब जो कि हमें चाहिए वो ही मिले, वो किसी और माइक्रोब से कंटामिनेट ना हो. तो इस बेसिकली इस तरह के प्रोसेसेस में एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है, वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है, एंजाइम्स को प्रोड्यूस किया जाता है. Let us now understand the conceptual development of the principles of genetic engineering. जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेडिशनली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स के थ्रू प्लांट और एनिमल्स के जेनेटिक कैरेक्टर को थोड़ा बहुत चेंज कर पाते थे जो कि हमारा ट्रेडिशनल process था. Traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes. So in case of traditional hybridization, when we were carrying out these traditional hybridization, what happened in that case, the undesired genes were also coming along with the desired genes. यानी कि जो undesirable characteristics थे जो हमें नहीं चाहिए प्लांट या एनिमल में वो भी आ जाते थे. बट इन केस ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी,
जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमें डिज़ायर्ड जीन्स ही मिलेंगे. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. The techniques of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. So हमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट ऑर्गेनिज्म ही मिलेगा, हमें अनडिज़ायरेबल जीन्स या अनडिज़ायर्ड set of genes नहीं मिलेंगे. So this is the most important advantage. Now let us move on to the tools of recombinant DNA technology. What are the tools of recombinant DNA technology? Now we know that as we know that the foregoing discussion, that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools. So we have some specific tools through which we can carry out this process of recombinant DNA technology. These tools are restriction enzymes, polymerase enzymes, ligases, vectors, and the host organism. Okay, let us now move on to the first tool, that is restriction enzyme. In the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. अ, सबसे पहले दो एंजाइम्स निकाले गए थे ई कोलाई से, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था. तो सबसे पहले हमें ये एंजाइम ई कोलाई से मिला था. वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए वाइल द अदर कट डीएनए. द लैटर वाज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो ई कोलाई से हमें दो एंजाइम्स मिले. पहले एंजाइम ने मिथाइल ग्रुप्स ऐड किया डीएनए को, वाइल द अदर कट डीएनए. जो दूसरा एंजाइम था, इट वाज नेम्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड दीज एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर वेरी बेनिफिशियल फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता था स्पेसिफिक पॉइंट्स पे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. The first restriction endonuclease, HIN second, whose functioning dependent on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. So the first restriction endonuclease enzyme जो था उसका नाम था HIN second. It was found out that HIN second show always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. तो इस हिन सेकेंड की खासियत ये थी कि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर पॉइंट पे ही काटता था बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स. ये सिर्फ 6 बेस पेयर्स को ही काटता था, उनको रिकॉग्नाइज करके, और ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को ही कट करता था. दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिन सेकेंड. तो इस सीक्वेंस को हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोले. Besides HIN second, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. So हमें HIN second के बाद हमें बहुत सारे restriction enzymes मिले, up to 900 restriction enzymes मिले, जो कि different bacterial strains से isolate किए गए थे. Okay, now let us move on to the types of restriction enzymes. Now the restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called nucleases. So there are two kinds. These are exonucleases and endonucleases. Okay, now we will first know what is exonuclease and what are endonucleases. So as I have marked with blue marker, exonucleases remove nucleotides from the ends of the DNA. Exonuclease nucleotides को remove करता है end से, from the ends of the DNA, whereas endonucleases
make cuts at specific positions within the DNA. Endonucleases specific points को कट करता है, डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट करता है, वेयर एज एक्सोन्यूक्लियसेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, ये सिर्फ एंड्स पे ही काटता है, ये बीच में नहीं कट कर सकता है। एंडोन्यूक्लियसेस सिर्फ स्पेसिफिक पोजीशंस पे ही कट करता है। Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at specific points in their sugar phosphate backbones. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequences in the DNA. सो ईच एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन बहुत ही स्पेसिफिक है, ये डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस पे ही कट करता है, डबल हेलिक्स को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट करता है। That is why it is called as restriction endonuclease. First it will inspect the length of the DNA. Firstly वो inspect करता है और उसके बाद अपने specific sites को पहचान करके वो उसको कट करता है. Now we can see this diagram. With the help of this diagram we can easily understand how this endonucleases actually works. So this diagram shows the action of restriction enzyme. Now we can see that this is the vector DNA. This is the DNA with the specific nucleotide sequences. Here the enzyme cuts both DNA strands at the same site. यहाँ पे वेक्टर डीएनए है और एंजाइम ने एंडोन्यूक्लियस ने उसको इक्वल जगह पे कट किया है. नाउ इको R1 cuts the DNA between bases G and A when the sequence GATTC is present in the DNA. Now eco R1 cuts the DNA between bases. It will cut the DNA between bases when the sequence GATTC is present in the DNA. That means it will cut at its specific points. ये सिर्फ specific points पे ही cut करेगा. Okay, now we can see the second part of the diagram. Here it is the nucleotide TTAA is present, and this is the sticky end of the DNA sequence. The other end is also the sticky end. So eco R1 cuts at specific points. These specific points are called as the sticky ends. Okay, coming to the third part of the diagram. Now what will happen? These both DNA fragments will join at sticky ends, and this the DNA fragments which joins, जो DNA fragments join होंगे actually with the help of the DNA ligases, उनको हम recombinant DNA बोलेंगे. ये specific sites पे काटेंगे. eco R1 स्पेसिफिक साइट्स पे काटेगा और स्पेसिफिक साइट्स पे काटने के बाद डीएनए लाइगेजेस की हेल्प से ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेगा. So these are the steps in formation of the recombinant DNA by action of restriction endonucleases enzyme, that is eco R1. Okay, now let us move on to the restriction enzymes, more function of restriction enzymes. आगे हम देखेंगे कि actually ये कैसे होता है. Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites, but between the same two bases on the opposite strands. This leaves single-stranded portions at the ends. These are overhanging stretches called sticky ends on each strand. So as we know that palindromic first we will know what are palindrome sequences. Palindrome sequences in DNA is a sequence of base pairs that read same on the two strands when orientation of reading is kept the same. For example, the following sequence reads the same on the two strands in 5' to 3' direction. This is also true if read in the 3' to 5'. So these are called like it will be read as 5' to 3', and again it can be read as 3' to 5'. So these are palindromic sequences. It means that both forward and backward it will be the same.
If read from both backward and forward style, it will be the same. So the restriction enzymes यहाँ पे कट करता है और ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पे कट करता है और ये स्टिकी एंड्स को लीव कर देता है. और फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, these are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. This thickness of the ends facilitates the action of the enzyme DNA ligase. So after this restriction enzyme cuts the DNA at the specific points. These specific points are called sticky ends, and afterwards they are joined with the help of the they form hydrogen bonds with their counterparts, with the complementary counterparts, and then they are joined with the help of the enzyme called DNA ligase. Now, restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant DNA, to form recombinant molecules of DNA, which are composed of DNA from different sources genome. Restriction endonucleases जो कि genetic engineering में use होते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बनाते हैं, एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. नाउ द डीएनए कैन बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. दे कैन बी plant, animal, bacteria, virus. So these DNA can be taken from large number of sources. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, and these can be joined together end to end using DNA ligases. As we have already seen in the previous diagram, here also it is explained. यहाँ पे एक foreign DNA है, आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये फॉरेन डीएनए है. सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट. ये वेक्टर डीएनए है जो कि हमारा प्लाज्मिड है, वेक्टर डीएनए. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने फॉरेन डीएनए को कट किया, वेक्टर डीएनए को भी कट किया, फिर लाइगेजेस एंजाइम ने दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, एंड ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बन गया. नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द बैक्टीरियल सेल, and here the cell will divide into, as the cells divide into as we know that the cells divide by the help of the mitosis. So this bacteria, this particular E. coli bacteria cell will divide this recombinant DNA molecule into large number of molecules, and we will get the desired amount of specific gene. This is the diagrammatic representation of recombinant DNA technology. Okay, you may have realized that normally, unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. जब तक कि हमें वेक्टर को सही, द one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant DNA molecule cannot be created. जब तक कि हम वेक्टर को और सोर्स डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटेंगे, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएट नहीं कर पाएंगे. नाउ अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रोसेस से, जब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनको कैसे निकाला जाता है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विच प्रोसेस. So this process is called as gel electrophoresis, separation and isolation of DNA fragments. The cutting of DNA by restriction endonucleases results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. So the cutting of DNA by restriction endonucleases, सबसे पहले ये कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस डीएनए को कट करता है, और these fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. So with the help of the gel electrophoresis, these DNA can be separated. Okay, now we will understand what is exactly the gel electrophoresis is. What is the process? What is actually the process? Since the DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium matrix.
Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from the seaweeds. So here there is a gel electrophoresis machine, and in this the DNA is loaded, and in the with the and in this the matrix which is commonly used is called as agarose. That is why it is called as agarose gel electrophoresis. It is a natural polymer which is extracted from the seaweeds. Now the DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. Hence, the smaller fragment size, the farther it moves. Okay, look at the figure here, a typical agarose gel electrophoresis showing migration of undigested and digested set of DNA fragments. Here in this machine, agarose machine, we can see that there are small wells created. In this small well, the DNA is loaded. DNA यहाँ पे लोड कर दिया जाता है. फिर agarose gel electrophoresis की भी टैंक में डाल दिया जाता है. और फिर क्या होता है कि जो डीएनए जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो पीछे रह जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो आगे आ जाता है अकॉर्डिंग टू दियर साइज. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द सीविंग इफेक्ट. जो यहाँ पे पॉलीमर यूज़ किया गया है अगारोज, वो एक नेचुरल पॉलीमर है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स एंड अकॉर्डिंग टू द साइज. और ये पॉलीमर जो है वो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. सीविंग इफेक्ट से ये द डीएनए जो बैंड्स हैं वो अपनी साइज़ के हिसाब से मूव करते हैं. जो जितने कम साइज़ का रहता है या स्मॉलर रहता है वो सबसे फारदेस्ट जाता है, और जो जिसका वेट जितना ज़्यादा होता है वो पीछे होता है. सो द लार्जेस्ट बैंड्स आर एट द टॉप एंड द स्मॉलेस्ट बैंड्स आर एट द बॉटम. The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation. Now ये जो bands होते हैं इनको separate कैसे किया जाता है? The separated DNA fragments they are stained actually with the help of a compound known as ethidium bromide. ये ethidium bromide stain करता है followed by UV exposure. This is actually with the help of this compound we can stain the DNA. It gets stained, it gets colored. वो colored हो जाता है DNA fragments और हमें वो properly दिखाई देने लगता है जब हम उसको UV radiation में लेके जाते हैं. Okay, now in the you cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining. You can see bright orange colored bands of DNA in ethidium bromide stained gel exposed to UV light. So ethidium bromides जो है orange colored के bands दिखाई देंगे. ये orange color में color कर देता है DNA को, और फिर जब हम इसको UV लाइट में लेके जाते हैं तो हमें बैंड्स दिखाई देते हैं ऑरेंज कलर के. द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल and extracted from the gel piece. This step is known as illusion. Now the separated bands of DNA, जो bands separate हो जाते हैं उनको हम कट कर लेते हैं और कट करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. इस प्रोसेस को हम इल्यूजन बोलते हैं. द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors. Now the DNA fragments here are purified and these DNA fragments are used to construct the recombinant DNA by joining with the cloning vectors. यही fragments हम सेपरेट करके ले जाते हैं और जो भी वेक्टर्स होते हैं, प्लाज्मिड्स रहते हैं, उनके साथ कंबाइन करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाते हैं. Now coming to the cloning vectors. Okay, we know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. Now as we know that plasmids और bacteriophages जो होते हैं वो खुद से replicate करते हैं within the bacterial cells independent of the chromosomal DNA. So bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy number of their genome within the bacterial cell. Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. Their numbers can go higher.
So, if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. So, since ये plasmids और bacteriophages की एबिलिटी होती है कि ये खुद से रेप्लिकेट करते हैं, इनके बैक्टीरियल से खुद से रेप्लिकेट करते हैं, और रेप्लिकेट करने के बाद ये बहुत सारी खुद की कॉपीज़ बना सकते हैं। इसलिए हम जब इसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं तो ये उनकी भी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं, और इसलिए यही वेक्टर्स इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. So these vectors are very useful in the process of genetic engineering. Okay, now the following are the features. Here are the features features that are required to facilitate cloning into a vector. Now how we will introduce these DNA into the cloning vector. So first important point that we required to know is origin of replication, that is ORI. Origin of replication, that is ORI. This is a sequence from where replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. So this is a sequence. URI is a सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन पॉइंट स्टार्ट होता है उसको हम ORI बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहाँ से कोई भी पीस ऑफ DNA को अगर हम लिंक कर दें तो वहाँ से वो रेप्लिकेट करता है विद इन द होस्ट सेल्स। Okay, now the second point is selectable marker. In addition to ORI, the vector requires a selectable marker which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants. Now the vector also requires a selectable marker. इस जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड में हमें सेलेक्टेबल मार्कर की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि आइडेंटिफाई करता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को eliminate करता है and selectively permitting the growth of the transformants. Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, or kanamycin, etc., are considered useful selectable markers for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. So, transformation is a procedure. ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पीस ऑफ डीएनए होस्ट बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और वो एनकोड करता है स्पेसिफिक फीचर्स के लिए, वो एनकोड करता है। फॉर एग्जांपल द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, कुछ जीन्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं टूवर्ड्स द एंटीबायोटिक्स, दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट टूवर्ड्स द एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। दे आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। सो ई कोलाई के लिए ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। सो द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स जो है वो इस ऐसा कुछ भी नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स को नॉर्मल ई कोलाई सेल्स ऐसे कोई भी रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स को कैरी नहीं करता है। Third site is cloning site. In order to link the alien DNA, the vector needs to have a very few, preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzymes. Presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic genes. So cloning sites यहाँ पे
एलियन डीएनए को लिंक करने के लिए स्पेसिफिक क्लोनिंग साइट्स की ज़रूरत होती है. The vector needs to have very few, preferably single recognition sites. There should be single recognition sites. अगर एक से ज़्यादा recognition sites होते हैं वेक्टर के लिए, तो वेक्टर जो है वो इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, जीन क्लोनिंग प्रोसेस को वो कॉम्प्लिकेट कर देगा. इसलिए हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ही चाहिए. द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes. So the ligation of alien DNA जो बाहर का DNA है is carried out at a restriction site. उसको हम लोग एक restriction